ओम श्री विष्णवे नमः। श्रीदेवैः कृतं महाविष्णुस्तोत्रम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः भयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदत्स्वरसत्कृतः। देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाध्य महापुरुष पूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकाम फलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवे साध्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतार वेदाना मुद्दाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः। जया कुपार दैत्यारे सुर कार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः। जयादिदैत्य नासार्थ मादिसूरक रूप धृतक महायुद्धार कृतज्ञोग कोल रूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करज्वैर्वरदृप्तांगं तस्मै नरहरे नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सच्छलयामाश तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जाम्बदग्नाय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमदासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीसलाच्छनः भाराकान्तां महीं योषा उज्जराहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञ विघाताय पशुहिंसा निवर्तये बौद्धरूपं दधो योषो तस्मै देवाय ते नमः। मलेच्च प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्की रूपं समादध्यो वेददेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्य विघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारी जलात्मसु रूपं येन तव्या देव कोऽन्यस्तवत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छी गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुच्यथ भवतां नाशयामि दुःखं परमदुस्सहं। वणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परं प्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्ग्रहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिका पैता शैलेष्मशम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मृत्यग्रहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देह चात्रकार्येणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिशोषकः प्रसन्नमनसः सर्वे
पुनरुचुर्वृषा कपिम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः भयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टुर्भक्त्या गदत्स्वरसत्कृतः देवा ऊचुः जय विष्णु रमेशाध्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाध्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतार वेदाना मुद्दाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः। जया कुपार दैत्यारे सुरकार्ये समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः। जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूरकरूपधृतक महायुद्धारकृतद्योग कोलरूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करज्वैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नरहरे नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सच्छलयामाश तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जाम्बदग्नाय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमदासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथ्वीशलाच्छनः भाराकान्तां महीं योषा वुज्जराहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवर्तये बौद्धरूपं दधो योषो तस्मै देवाय ते नमः। मले च प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्कीरूपं समादध्यो वेददेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन तव्यादेव कोऽन्यस्तवत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हसयच्छी गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुच्यथ भवतां नाशयामि दुःखं परमदुस्सहं। वणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परं प्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्ग्रहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिका पैता शैलेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मृत्यग्रहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम्। एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु दुःखं कथ्यतां तद संशयं नाशयामि न सन्देह चात्रकार्येणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिशोषकः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं
रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुभयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टवुर्भक्त्या गदत्स्वरसत्कृतः देवा ऊचुः जय विष्णुरमेसाध्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेसाध्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतार वेदाना मुद्दाराधाररूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्यरूपाय ते नमः जया कुपार दैत्यारे सुरकार्य समर्पक अमृताप्तिकरेशान कूर्मरूपाय ते नमः जयादिदैत्यनाशार्थ मादिसूरकरूपधृतक महायुद्धारकृतज्योग कोलरूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करज्वैर्वरदृप्ताङ्गं तस्मै नरहरे नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सच्छलयामाश तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जाम्बदग्नाय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमदासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथ्वीशलाच्छनः भाराकान्तां महीं योषा उज्जराहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवर्तये बौद्धरूपं दधो योषो तस्मै देवाय ते नमः मलेच्च प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्कीरूपं समादध्यो वेददेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन तव्या देव कोऽन्यस्तवत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छी गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुच्यथ भवतां नाशयामि दुःखं परमदुस्सहं वणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परं प्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्ग्रहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिका पैता शैलेष्म सम्भविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः सम्भविष्यन्ति तन्मृत्यग्रहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देह चात्रकार्येणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिशोषकः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः भयान्वितं
स्तोत्रेण तुष्टवुर्भक्त्या गदत्स्वरसत्कृतः देवा ऊचुः जय विष्णोरमेसाध्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञस्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेसाध्य जगदुत्पत्तिकारण मत्स्यावतार वेदाना मुद्दाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जया कुपार दैत्यारे सुर कार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः जयादिदैत्य नासार्थ मादिसूरकरूप धृतक महायुद्धार कृतद्योग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करज्वैरवरदृप्तांगं तस्मै नरहरे नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सच्छलयामाश तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जाम्बदग्नाय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमदासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीसलाच्छनः भाराकान्तां महीं योषा उज्जराहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामाश पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवर्तये बौद्धरूपं दधो योषो तस्मै देवाय ते नमः मलेच्च प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्कीरूपं समादध्यो वेददेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मषु रूपं येन तव्या देव कोऽन्यस्तवत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हसयच्छी गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुच्यथ भवतां नाशयामि दुःखं परमदुस्सहं वणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परं प्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्ग्रहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिका पैता शैलेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मृत्यग्रहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान् नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु दुःखं कथ्यतां तद संशयं नाशयामि न सन्देह चात्रकार्येणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिशोषकः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं उत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः भयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टवुर्भक्त्या गदत्स्वरसत्कृतः देवा ऊचुः
जय विष्णुरमेशाध्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवेशाध्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतार वेदाना मुद्दाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः। जया कुपार दैत्यारे सुर कार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः। जयादिदैत्य नासार्थ मादिसूरक रूप धृतक महायुद्धार कृतद्योग कोल रूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करज्वैरवरदृप्तांगं तस्मै नरहरे नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सच्छलयामाश तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जाम्बदग्नाय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमदासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाच्छनः भाराकान्तां महीं योषा वुज्जराहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवर्तये बौद्धरूपं दधो योषो तस्मै देवाय ते नमः। मलेच्च प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्कीरूपं समादध्यो वेददेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन तव्या देव कोऽन्यस्तवत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छी गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुच्यथ भवतां नाशयामि दुःखं परमदुस्सहं। वणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परं प्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्ग्रहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिका पैता शैलेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मृत्यग्रहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देह चात्रकार्येणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिशोषकः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं। उत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः भयान्वितं। स्तोत्रेण तुष्टवुर्भक्त्या गदत्स्वरसत्कृतः देवा ऊचुः जय विष्णुरमेशाध्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक
सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक महाविष्णु ध्रुवे साध्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतार वेदाना मुद्दाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः जया कुपार दैत्यारे सुर कार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः जयादिदैत्य नासार्थ मादिसूरक रूप धृतक महायुद्धार कृतज्ञोग कोल रूपाय ते नमः नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करज्वैरवरदृप्तांगं तस्मै नरहरे नमः वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सच्छलयामाश तस्मै वामनरूपिणे दुष्टशत्रविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जाम्बदग्नाय ते नमः दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमदासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथ्वीशलाच्छनः भाराकान्तां महीं योषा उज्जराहार महाविभुः धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवर्तये बौद्धरूपं दधो योषो तस्मै देवाय ते नमः मलेच्च प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्कीरूपं समादध्यो वेददेवाय ते नमः दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत् जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन तव्या देव कोऽन्यस्तवत्तो दयानिधिः इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा तेषां स्तवं समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छी गदाधरः श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुच्यथ भवतां नाशयामि दुःखं परमदुस्सहं वणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परं प्रीतः स्तवस्याश प्रसादतः य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पशेत् कदा अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्ग्रहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिका पैता शैलेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मृत्यग्रहे यः स्तोत्रपाठकः किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः देवा भवत्सु दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देह चात्रकार्येणुरेव च एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिशोषकः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिं सूत उवाच ते गत्वा देवदेवेशं रमानाथं जगद्गुरुं विष्णुं कमलपत्राक्षं ददृशुः भयान्वितं स्तोत्रेण तुष्टवुर्भक्त्या गदत्स्वरसत्कृतः देवा ऊचुः जय विष्णुरमेसाध्य महापुरुषपूर्वज दैत्यारे कामजनक सर्वकामफलप्रद महावराह गोविंद महायज्ञ स्वरूपक
महाविष्णु ध्रुवे साध्य जगदुत्पत्ति कारण मत्स्यावतार वेदाना मुद्दाराधार रूपक सत्यव्रतधराधीश मत्स्य रूपाय ते नमः। जया कुपार दैत्यारे सुर कार्य समर्पक अमृताप्ति करेशान कूर्म रूपाय ते नमः। जयादिदैत्य नासार्थ मादिसूरक रूप धृतक महायुद्धार कृतज्ञोग कोल रूपाय ते नमः। नारसिंहं वपुः कृत्वा महादैत्यं ददारयः करज्वैर्वरदृप्तांगं तस्मै नरहरे नमः। वामनं रूपमास्थाय त्रैलोक्यैश्वर्यमोहितं बलिं सच्छलयामाश तस्मै वामनरूपिणे। दुष्टशत्रुविनाशाय सहस्रकरशत्रवे रेणुकागर्भजाताय जाम्बदग्नाय ते नमः। दुष्टराक्षसपौलस्य शिरच्छेदपटीयसे श्रीमदासरथे तुभ्यं नमोऽनन्तक्रमाय च। कंसदुर्योधनाद्यश्च दैत्यः पृथिवीशलाच्छनः भाराकान्तां महीं योषा उज्जराहार महाविभुः। धर्मं संस्थापयामास पापं कृत्वा सुदूरतः तस्मै कृष्णाय देवाय नमोस्तु बहुधा विभो। दुष्टयज्ञविघाताय पशुहिंसा निवर्तये बौद्धरूपं दधो योषो तस्मै देवाय ते नमः। मले च प्रायेऽखिले लोके दुष्टराजन्यपीडिते कल्कीरूपं समादध्यो वेददेवाय ते नमः। दशावतारास्ते देव भक्तानां रक्षणाय वै दुष्टदैत्यविघाताय तस्मात् त्वं सर्वदुःखहृत्। जय भक्तार्तिनाशाय धृतं नारीजलात्मसु रूपं येन तव्या देव कोऽन्यस्तवत्तो दयानिधिः। इत्येवं देवदेवेशं स्तुत्वा श्रीपीतवाससं प्रणेमुर्भक्तिसहिताः साष्टाङ्गं विबुधर्षभा। तेषां समाकर्ण्य देवः श्रीपुरुषोत्तमः उवाच विबुधान् सर्वान् हर्षयच्छी गदाधरः। श्रीभगवानुवाच प्रसन्नोऽस्मि स्तवेनाहं देवास्तापं विमुच्यथ। भवतां नाशयामि दुःखं परमदुस्सहं वणुध्वं च वरं मत्तो देवः परमदुर्लभं ददामि परं प्रीतः स्तवस्यास्य प्रसादतः। य एतत् पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः मयि भक्तिं परां कृत्वा न तं शोकः स्पशेत् कदा। अलक्ष्मीः कालकर्णी च नाक्रामेतद्ग्रहं सुरा नोपसर्गा न वेताला न ग्रहा ब्रह्मराक्षसा न रोगा वातिका पैता शैलेष्म संभविनस्तथा नाकालमरणं तस्य कदापि च भविष्यति। सन्ततिश्चिरकालस्था भोगाः सर्वे सुखादयः संभविष्यन्ति तन्मृत्यग्रहे यः स्तोत्रपाठकः। किं पुनर्बहुनोक्तेन स्तोत्रं सर्वार्थसाधकम् एतस्य पठनान्नृणां भुक्तिमुक्ति न दूरतः। देवा भवत्सु दुःखं कथ्यतां तदसंशयं नाशयामि न सन्देह चात्र कार्येणुरेव च। एवं श्रीभगवद्वाक्यं श्रुत्वा सर्वे दिशोषकः प्रसन्नमनसः सर्वे पुनरुचुर्वृषा कपिम्। इति श्री देवी भागवते दशम स्कन्धे पंचमाध्यायान्तर्गतं देवैकृतं महाविष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम्।